Hello everyone, thank you so much for all the love and support जो आप लोग मुझे दे रहे हो. So cheers everyone. And I guess आज सारा कुछ Amazon मैंने करके रखा है. Hmm. हो भी क्यों ना. It's quite a special day for me. So it's been an year that I have joined my dream company Amazon as a technical account manager. सो यार ये जर्नी आज की नहीं है. आई गेस एज अ इंडिविजुअल हम लोग सब लोग एक ड्रीम देखते हैं. और एज अ आईटी एस्पिरेंट मैंने भी, और एन इंजीनियर एस्पिरेंट, आई हैव आल्सो सीन द सेम ड्रीम. मैंने भी ये ड्रीम देखा था 2012 में जब मैं कॉलेज जा रहा था. एंड राइटली सेड, कॉलेज में वो एक ड्रीम ड्रीम ही रहा. लगा शायद तक कभी लाइफ में ये पूरा हो भी पाएगा कि नहीं. But yes, tables turn around. After spending 4.5 years in the industry with my last company, Red Hat, I decided to choose something challenging for me. And I tried my hand with the Amazon. And luckily and thankfully to the team and my luck, my family, and my friends who pushed me hard, कि भाई जाओ and make a great out of it. And here I am spending 1 year with Amazon. सो आई थॉट कि यार मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो एस्पिरेंट रखते हैं कि यार हम लोग भी अमेजोन में जॉब करें या अमेजोन ज्वाइन करें. तो आई थॉट ऑफ कि यार एक सेशन करता हूँ जिसमें मैं बड़ा क्विक एंड शॉर्ट मेरी लर्निंग शेयर करता हूँ कि थ्रू आउट माई अमेजोन लर्निंग फॉर 365 days what I have tried and how I have spent my Amazon journey. तो ये बड़ा शॉर्ट एंड क्विक वीडियो रहेगा. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ आई हैव स्पेंड माय अमेजॉन जर्नी. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस वीडियो इज मेजरली नॉट स्पॉन्सर्ड. This is not being like you can say influence. This is my personal opinion and I take the complete authority of whatever I am sharing. सो जॉब रिलेटेड थिंग्स हम लोग सब बाद में बात करेंगे. आज हम लोग वो की इंग्रेडिएंट्स हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में जो मेरे 365 डेज की जर्नी रही है. फोरमोस्ट एज आई सेड कि जब मैं कॉलेज से निकला आई वाज नॉट प्लेस्ड एंड आई वर्कड हार्ड टू बी एट हियर. सो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लाइक 5 years struggling in the industry and finding my path towards Amazon, I went through a roller coaster ride. Now what I'm doing today is because of one of the believing that actually Jeff Bezos has said, and one of those quotes which I'm sharing with you now is something that has influenced me to be what I am today. So if you see the screen, and let me make my visual small. So this is a particularly saying by Jeff Bezos which says that I knew that I have failed. I wouldn't regret that. But I knew that one thing I might regret is not trying. Short and sweet. शायद तक बहुत लोग यही हार मान जाते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करते हैं. या मैं ये बोलूं कि हर एक इंजीनियर पर्सन एस्पायर तो करता है टू बी एन अमेजोनियन, बट वो रिजेक्शन से डर जाता है कि यार रिजेक्ट हो गया. नहीं, आई थिंक इट इज द बाउंस बैक टाइम जो हर किसी को करना चाहिए. यू शुड नॉट बी रिग्रेट दैट हे आई वाज नॉट एबल टू सिलेक्ट. यू शुड बी थैंकफुल इनफ दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. और हर एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ टीच ही करने वाला है. विद दैट स्पिरिट आई गेस आई डिसाइडेड टू टुक अ हिट, एंड लकीली आई वाज ब्लेस्ड थैंक्स टू माय मॉम, डैड एंड माय एंटायर फैमिली जिन्होंने मुझे उस tough situation में support किया. And more importantly, thanks to the entire team Cheers with Gourav and everyone who is listening this podcast, कि बहुत टफ टाइम में आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स ही आपको राइट क्रिटिक बन के राइट गाइडेंस देते हैं. एंड आई गेस मेजरली फॉर मी दैट थिंग केम आउट एट द राइट टाइम when I was about to get married. Before that, I went to my mom and dad and I said that, hey, I want to take a chance. And I took a chance. I'm glad and I'm not regretting it today. Like why it is not happening, and let's try. And luckily I went through. So before I share my all 6 learning, please invite your friends and connection, and please do share the video with your friends and connection. I hope these 6 points that I'm going to share will help you more oftenly. And let me see the right chat. Hey Ajit, thank you so much joining the live podcast. Thank you so much for congratulating me.
Thank you, Smita, for cheering up. Thank you, Anshul, for joining the screen. Thank you so much. Means a lot to me and my entire family. Yeah, sure, Ajit. Means I'm trying to be regular. I'm coming up with very new and interesting concept. As you can see from December, we have come up with the trying to be on the regular front, but definitely I'll be very honest. There are fantastic podcasts that I have written during the breaks, and now it will be live every single week. I'll try to be consistent on that part. Thank you so much on that part. Thank you so much, Anisa, for joining the live today. Means a lot that you have, or you're also hearing the things. Okay, so now let's come to the part कि हम लोग मैं अपनी 6 strategy share कर रहा हूँ which I have learned during the my 1 year with Amazon. Now, here comes the very first strategy. When it comes to the first point, I have believed detachment is something that has helped me a lot. When I say detachment, what is it all about? Now, thing is, you might be also in the situation. Let's take an example that you are switching a company. So when you switch a company, you always believed or that you have moved on. But actually, to move on, you need to be detaching yourself completely from your past. सिमिलर वे जब आप कॉलेज छोड़ते हो और अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करते हो यू कंटिन्यूअसली डोंट चेज योर कॉलेज लाइफ similar thing happened, and one of the things that I focused was a detachment, that hey, I don't want to see my past where I came from. I want to keep my eyes and ears open कि जो भी लर्निंग आ रही है I want to grasp it. I don't want to step into a career जहां मैं इस बेसिस पर जाऊंगा यार मुझे तो ये आता है, मुझे ये सब कुछ पता है, तुम बस मुझे मत सिखाओ. Thing is, detachment is important because that is going to help you to give more and more opportunity to learn. Once you detach yourself, one of the best example I did, as soon as I decided to switch my gears to the new company, I completely unfollowed the last work that I have done. Ethics I learned, I respect, and I'm completely thankful to the job that I was doing for 4.5 years. But to progress, I completely detached myself from everyone, and I started focusing on the new career goal that I have aspired for. So, my first tip is, if you are planning to take a big step in your life, one thing you need to learn is your detachment. Learn to detach yourself. Say no. If you don't think it is right, be in the resourceful group. And if you think it is not working, absolutely don't hesitate to say no. So, that is going to be your first point, which I have learned. Detachment is the key to success. Let's see the second point. Second is the brutal honesty. बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप स्टेपिंग स्टोन कर रहे होते हो, आपने कंपनी स्विच करी या आप कॉलेज से फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हो, बहुत लोग अपना ऑनेस्टी साइड छुपा लेते हैं. लाइक फॉर एन एग्जांपल, योर मैनेजर केम टू यू और योर टीम लीड केम टू यू एंड आस्क्ड फॉर अ टास्क. बिकॉज यू वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन, विलिंगली और अनविलिंगली हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पर हम झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट स्टेपिंग एंड सेइंग लाई. We start stepping our stones towards lies. I know. And then you start copy pasting the things from here and there, and ultimately it might work or it might not, but definitely there will be a chance to lead to the failure. Be brutally honest to yourself that what you know is okay, what you don't know, happy to learn. So one of the things that at Amazon, what I was striking when I joined was, I know that I was not perfect in cloud, but what I can do is I can learn. So whatever I was knowing was okay, but when I was having an hesitant, I always raised my hand during my team meeting, during whenever I was in an office, or whenever I go and met with my colleagues. I was brutally honest that hey, I don't know, man. Please teach me. So I was open for the opportunity. And to be honest with you, once you become honest, the other person recognize it very well. So try to be honest with whatever the work you are doing and whatever the stepping stones you are taking. Because failures will happen. Things will not go as you have planned. But honesty is always going to help you to some learning aspects. So always be honest with yourself, with your work, and with your colleagues as well. थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. थिंक बिग.
And this is one of the leadership principle of at Amazon. I have personally believed, and this has helped me to achieve a lot. मैं एक बात में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि वो लोग मेरे अकॉर्डिंग फेलियर हैं जो एक गोल सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बड़ा होता है और वो उसको अचीव कर लेते हैं. मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग and you see that okay, I can achieve it, make it more larger. For an example, when I was in college, मुझे पता चल गया था फोर्थ ईयर तक आते आते कि मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, but I took it as a challenge that hey, I don't want to go in a company where I'm just getting 5,000 or 10,000 stipend. And thanks to many opportunities which came my way, but I absolutely said no. I focused on one thing that hey, I want to achieve big. Failures came in, I got a lot of rejections, बहुत rejection आए थे, trust me. But when I got the opportunity, I make it best. Learn किया. जब मुझे लगा कि एक मेरा लाइन कर्व से स्ट्रेट लाइन पर आ गया है, तब मैंने अपने आप को वापस से चैलेंज किया. And that's where I started thinking more big. What's next? I talked to my manager that hey, I want to pursue another opportunity. Is there a way? I was brutally honest with my manager that hey, this is my aspiration and that's the reason I want to go. He supported me. I went to another level. Then again, when I thought of like okay, now again it has come to the flat line. What I should do? I started looking for another opportunity. Again, I made my dreams bigger and bigger. So thinking big will always help you to be more successful. Don't limit your things. Achieve small and be happy. No. फॉर एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, जो बहुत इजीली मैं रोटेट करवाऊंगा, बहुत इजीली रिलेटेबल थॉट है. एंड ये मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल देखा, मतलब सोचने की बात है. देखो, अगर आपकी सिस्टर है आपके पास, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपकी मम्मा है, आप उन्हें शॉपिंग कराने लेके जाओ. घर से बात करके जाओ कि चलो एक टॉप लेने चलते हैं. आप लोग एक रिलायंस स्मार्ट में मान लो या फिर आप कहीं पर भी पहुंच जाओ. एज सुन एज यू एंटर होते के साथ जो फर्स्ट टॉप है वो उनको पसंद आ गया. ट्रस्ट मी, वो लास्ट मतलब जो शॉप का डेड एंड है, गर्ल्स वहां तक जाएंगी चाहे उनको वो फर्स्ट लेना हो, बट वो लास्ट तक जाएंगी एंड दे विल कीप ऑन कन्विंसिंग यू कि चेकआउट तो कर लेते हैं, चेक तो कर लेते हैं. हो सकता है लास्ट तक आते आते वो भी वो एक्सेप्ट ना करें, बट अल्टीमेटली वन लर्निंग फ्रॉम दैट थिंग इज वो लास्ट तक जाते हैं हर एक अपॉर्चुनिटी को चेक करने की शायद इससे भी बेहतर मिल जाएगा, इससे भी बेहतर मिल जाएगा. एंड आई पर्सनली बिलीव ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. जब आप कोई टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो या आप अपना करियर परस्यू कर रहे हो, आप सेटल मत हो यार. डोंट सेटल फॉर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग. ऑलवेज बी ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग योर वे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग बिग एंड मेकिंग योर थिंकिंग बिग. सो ऑलवेज थिंक बिगर एंड बिगर व्हाट यू कैन डू. आई एम नॉट सेइंग यार उसका मतलब ये नहीं कि जॉब चेंज कर लो सबके सब. अपनी ही जॉब में अपने आप को बेटर कैसे करो, आपकी करंट स्टेट से आप कल सुबह बेटर कैसे बनो. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस थिंग्स एंड अल्टीमेटली थिंकिंग बिग कैटेगरीज. ये आपको अल्टीमेट हेल्प करेगा उसको मोर इंप्रूव करने के लिए. सो दिस इज माय थर्ड प्रिंसिपल दैट आई हैव लर्नड एट Amazon. स्टार्ट थिंकिंग बिग, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट आपको पर्सनली भी बहुत हेल्प करेगा टू अचीव बिगर एंड बिगर ड्रीम्स फॉर योरसेल्फ. चलो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की. फोर्थ पॉइंट इज द कस्टमर ऑब्सेशन. तो मैंने अपने एक लास्ट वेबिनार में और मैं बहुत सारे सेशंस में बोलता हूं, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ. लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग योरसेल्फ. अब इससे होता क्या है, आप किसी को भी सामने जो आपके इंसान बात कर रहा है, या फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलने गए हो, या आप अपना प्रोडक्ट सेल करने गए हो, या अपना सॉल्यूशन बेचने गए हो, या आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, या आप अपने कॉलेज में किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. अब एक्सप्रेस करना सीख लिया, उसके बाद क्या, हम लोग एक्सप्रेस तो कर लेते हैं बट हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते हैं. एज सून एज समबडी सेज नो, यू स्टॉप द वर्क एंड यू कम बैक. नहीं, मेरे को एक Amazon प्रिंसिपल जो सबसे ज्यादा फील हुआ था, which was customer obsession. The thing is, when you are obsessed that hey, some person is coming out to you or you are going to somebody to give help or take help, you need to be obsessed. यार मुझे ये काम करना है, let's find alternatives. तुम अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, शायद किसी और की हेल्प लो बट वो मैसेज कन्वे करो.
फॉर एग्जाम्पल एक देता हूं, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मेरे साथ भी है, टेक्निकल बात करते हैं। मैं एक कस्टमर के पास गया कि सर ये सोल्यूशन है, आप मेरा ले लो, आपको ये प्रॉब्लम है। कस्टमर सीधा मना कर देता है। द थिंग इज, आप गलत वे में अप्रोच कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है और ये मेरा सोल्यूशन है। आपको उसको प्रॉब्लम को एक सिनेरियो दो, यार आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, बट आई थिंक दिस कैन बी बेटर। और वो बेटर कॉन्फिडेंस देगा ना, जब जब आप कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस देते हो यार आप एक अच्छा कर रहे हो, बट मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कस्टमर को सीधा बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम है जी, कर लो सॉल्व, मेरे पास सोल्यूशन है। यू आर जस्ट गोइंग लाइक अ सेल्समैन जो आपको मॉल में मिलते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड खरीद लो। आपको कभी भी कोई ये नहीं पूछता कि आप क्रेडिट कार्ड क्यों खरीदो, या आपको सच में क्रेडिट कार्ड की जरूरत है क्या। आप पहले प्रॉब्लम कन्वे करना सीखो। सॉल्यूशन है मार्केट में। जब आप प्रॉब्लम किसी की समझ जाओगे या अपनी प्रॉब्लम को किसी को समझा दोगे, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिलना लग जाएगा। मैनी टाइम्स मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स, कलीग, स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे पूछते हैं कि यार सर आप बड़े ओपन हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी वाइफ के साथ, हाउ। इट्स जस्ट दैट आई एम ऑनेस्ट विद देम, एंड व्हाटएवर द गाइडेंस आई नीड, आई एम ऑलवेज मेकिंग माय वर्ड्स क्लियर कि भैया मेरी ये आस्क है, आप बताओ गलत क्या है। If something is wrong, we can work it out. But this is, I need to be there. So similar way, आज मेरा प्रोफेशन है टेक्निकल अकाउंट मैनेजर एट Amazon. I need to be customer obsessed. कि कस्टमर को अगर कोई इश्यू हुआ है, I need to make every single damn ring and possible way to get the problem resolved. तो सेम चीज मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, जब से मैंने लीडरशिप प्रिंसिपल अप्लाई किया है, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वन थिंग, ओके, everyone is a salesman in one or the other way. You are selling your words to somebody else. You need to be obsessed with the other person personality also. आप किससे बात कर रहे हो, आप किसके साथ रह रहे हो, आप किनके साथ उठना बैठना कर रहे हो. It is rightly said that you are the average of 10 people around you. So make yourself so enriched and be aware that you are not in a circle of non-resourceful people around you. अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि सच में नहीं है, तो उनको मना करो या आप वहां से किनारा करो, पर उन लोगों के साथ लास्ट मोमेंट तक खड़े रहो जो आपके साथ खड़े हैं, राइट। सो यू नीड टू बी ऑब्सेस्ड विद द पीपल एंड मेक देम कन्विंस और मेक देम हेल्प टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करना क्या चाह रहे हो, आप क्या बताना चाह रहे हो, या आपके पास कोई सोल्यूशन है और उनकी प्रॉब्लम अगर उससे रिजॉल्व हो सकती है। सो गिव वैल्यू टू देम एंड मेक श्योर दैट यू आर ऑब्सेस्ड with them always. So this has helped me a lot personally growing at Amazon. And the very next point, I guess ये point है जो मैंने मतलब पहले शायद तक मैं बिलीव नहीं करता था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग Amazon मुझे इसका बहुत हेल्प हुआ है मेरे लीडर्स से, networking and your vision. So at Amazon we have this culture to go and meet everyone once you join an organization. Trust me, मैंने अपने first month में around 30 to 40 people से connect किया था, and everyone was just saying one thing, that in your first 3 months try to reach as much as people you can and tell us about, or tell them about your vision, that why you are here, what are your expectations, learn from their experience, and that would help you to frame that if in future any problem come, I should be knowing to whom to reach. Use your skill sets from the past, that hey, this is something I know, this is my expertise, this is something that I'm struggling with. Set up your right vision, that why you are here for the job. And this networking has always helped you whenever you are stuck somewhere. And as rightly said, your net worth is your network, or your network is your net worth. तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं नेटवर्किंग में, लोगों को मिलो, जाकर के अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपना विजन बताओ, अपना मिशन बताओ, एंड ट्रस्ट मी, पीपल विल हेल्प यू इन अचीविंग दैट। इस रिवर्स में एक पॉइंट भूल मत जाना कि तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम उनके पास लेकर के जा रहे हो या अपना विजन उनको बता रहे हो। लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, हियर देम आउट ऑल्सो। Please go and talk to them, and it should be a two-way conversation. It should not be just a one-way conversation. So what happens majorly, I have believed, स्टूडेंट आपके पास, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूं, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो आकर के, सर आप बहुत अच्छे हो, सर आप Amazon में हो, हमें रेफर कर दो। Nobody asked, trust me,
some people can ask, okay, 10% लोग पूछते भी हैं और वो आके पूछते हैं कि सर जेन्युइनली हमारा ये अप्रोच है, शुड वी फॉलो और नॉट, क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो कि नहीं? लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम बैड एट कोडिंग, आई एम नॉट गुड एट कोडिंग, एंड somebody comes and asks me, sir, hey, can you teach me Python? Boss, your question is not valid. First of all, ask that, like, कि आप मतलब पाइथन में प्रोफिशिएंट हैं या नहीं है, क्या आपको ये स्किल सेट्स पता है या नहीं पता, क्या मेरी आप, अच्छा मैंने मना कर दिया तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो राइट कनेक्शंस ढूंढने में? कन्वर्सेशन तो करो. As soon as I put a full stop, the other person also puts a full stop, and that's where your mission alignment, vision alignment is wrong. तो मैं ये अपना फिफ्थ प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करता हूं, विच इज नेटवर्किंग एंड योर विजन. बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी क्लियर इन योर विजन. इसीलिए इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years or 10 years. You should be clear in your thoughts कि यार मुझे next 5 years से next 10 years से मुझे क्या करना है. You should be very much patient to achieve that, and you have to do every single damn thing to achieve that. And trust me, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है जो बहुत लोग नहीं करते हैं. एक दो लोगों से बात करी, आपको लगा कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, एंड यू स्टार्ट क्विटिंग दैट सॉल्यूशन. ट्रस्ट मी, यू हैव टू नॉक एवरी सिंगल डोर टू गेट द हेल्प, क्योंकि आपके लिए और कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ आप ही खड़े होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर दैट बिफोर क्विटिंग यू हैव ट्राइड इनफ. अगर 200 दरवाजे हैं, मुझे 200 दरवाजे के 200 दरवाजे बैंग करने के बाद मुझे आइडिया ड्रॉप करना है. 199 पे भी क्विट नहीं करना है. एंड यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज दैट वाज यू हु हैव डिसाइडेड टू चूज दैट विजन. तो नेटवर्क बनाओ, अपनी नेटवर्किंग कंटिन्यू रखो. डोंट जस्ट रन बिहाइंड फॉर अ पर्सन दैट ही इज सक्सेसफुल और ही इज नॉट सक्सेसफुल. इफ यू थिंक दैट पर्सन इज गुड इनफ टू टॉक, if you think that person is resourceful, go tell your vision. Trust me, that person will help in one or the other way. So my fifth principle, networking and your vision is equally important whenever you step on the next ladder of your journey. Last but not the least, the sixth and the most important point that Amazon has taught me is your authenticity and writing. अब इससे क्या मतलब है? Authentic का मतलब है genuine. थिंग इज, जब आप एक रोल पर होते हो, आप बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट कर देते हो, विच आई पर्सनली फेल्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कुछ भी कमिट करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन कमिट. यू नीड टू बी ऑथेंटिक इनफ कि व्हाट यू आर सेइंग. ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर लाइक सेइंग समथिंग टू समवन, it needs to be correct, it needs to be true, it needs to be honest. Thing is, let's take an example. Somebody reached out to you for a hope of something and you just falsely commit that. The other person is enjoying that, hey, somebody else is helping me out, and trust me, when he looks back and if it doesn't get fulfilled, that person will lose hope. So if you are committing your time, be there at the time. You need to be authentic enough that you are committing something which is not false or it is not in your hand. Then writing. In your career, writing plays a very important role. And at Amazon, one thing I have learned is the documentation. I guess few days back, one of my friend came to me and asked, यार गौरव सर, आप सब चीजें कैसे मेंटेन करते हो? I simply gave one answer, which my manager and my leadership team has taught me. If you have an idea, write it down. Whatever the day job you are doing, write it down. So that every single week you have at least 7 different things that you have done. And if you think that out of these 7, one thing is something that I want to repeatedly doing, keep it highlight. So at the month end, you have 30 different things that you have done in 1 month. Or at least you will be having 4 to 5 things that you can highlight to your team lead or to your manager that, hey, in this last month, this is what my experience, and these are the top 5 highlights or lowlights that I want to commit. That will be helping your personal goal. And before that also, write down your vision in front of you.
Even means I cannot rotate the camera now. Otherwise, you will be able to see that at my wall I have pasted my like sticky notes where I have my clear vision written, to do task written, and every single thing that I want to do in next 7 to 10 days, or at least for a longer term. At least I have kept my vision and I have pasted the permanent tape onto it, so that whenever I sit on my desk, that vision is always in front of me, and that's what I have written, not just typed. So writing, even typing should be fine, but ये writing आपको हमेशा help करेगी to make yourself like revive, and it will be more authentic also. For an example, you committed something to your customer and you didn't send an email. The customer might come back and say that you have committed 1, 2, 3. Whether you remember or not, you have just committed one. So now this 2, 3 point is a miscommunication in between both of you. Write down an email, send it to your customer that, hey, this is something, a minute of meeting, and this is something we have committed to do. It will be authentic that, hey, you have committed something and you are delivering that thing. चलो, ये तो प्रोफेशनल की बात होगी. पर्सनल में अब कमिटमेंट क्या है? पर्सनल में भी ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है. आप किसी को फॉल्स कमिट नहीं कर सकते हो. आपने अपने फ्रेंड को कुछ बोला, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया, उसको भेज दो यार, अच्छा ये चीजें हैं. बहुत बार ऐसा होता है, आपके मॉम या डैड आपको बोलते होंगे मार्केट से सामान ले आओ. आप दिमाग में 3-10 चीजें याद करके चले गए, वहां पहुंचे 5 याद रही, घर पे आए 3 मिली, 2 नहीं मिली. मम्मा कह रही है पीछे कि मैंने तेरे को 10 चीजें भेजी थी. आप फाइट भी कर सकते हो या बोल सकते हो वापस लाओ. बट द थिंग इज, वेरी स्मॉल थिंग इज, राइट इट डाउन एंड सेंड इट. And these small writing, when I'm saying this example of WhatsApp, is very much different. In corporate life, writing plays a very important role. इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन का one of the thing is you need to be good in writing and your verbal communication. ठीक है यार, ग्रामर नहीं आती, verbs, pronouns, nouns नहीं आते, बट एटलीस्ट जो आप लिख रहे हो उसको एकदम ऑथेंटिक लिखो, उसको एकदम करेक्ट लिखो. देयर आर मेनी टूल्स दैट यू कैन इंस्टॉल लाइक ग्रामरली और XYZ, मुझसे ज्यादा ही जानते होगे. उनको इंस्टॉल करो और प्रॉपरली राइट करके लिखो. कैलेंडर इनवाइट भेजो अगर आपको अपने कलीग से मीटिंग करनी है, और क्लियर कट एजेंडा लिखो, पॉइंट्स लिखो, टाइम ब्रेकअप लिखो. द अदर पर्सन विल स्टार्ट गिविंग यू मोर इंपॉर्टेंट दैट he or she is valuing your time, so does I have to. Very simple. So be authentic and write. Keep bringing writing into your habit, email writings, documentations, and this will help you to be more sharpen in your vision. So these are my 6 points that I want to highlight. And last but not the least, what I want to say is never ever compromise on your passion. One thing I have learned at Amazon, though I came from a very different world, but this is something that my leadership has always made me achieve. Never ever compromise on your passion. बहुत लोग अपने प्रोफेशन में इतना डीप हो जाते हैं कि वो अपना एक्चुअल पैशन भूल जाते हैं. If you are like to play, if your playing is your passion, and cricket, badminton, or whatever, try to find some time and do that. Do follow that. Like in my passion, I love to serve the community. So I find some time to give this thing after my working hours. So make sure that you never quit on your passion. Whether it is doing gym, whether it is playing activity, talking to your parents, reading books, whatever it is, never ever compromise on your passion when profession comes in. So this is one of the key things that I have always believed. And trust me, this has helped me a lot in making my successful journey over the last 1 year at Amazon, that I never compromised on my passion. I was always authentic, and I started learning writing skills because that has helped me a lot. More importantly, right from day one, I was open to do the network. Still, every new person who came in, I tried to connect for 10-15 minutes over the call. I always give my time. We make a commitment, make the writings clear, so that I ask his or her vision and I tell about my vision, so that if something aligns, we can be a good partner in future. More importantly, I always stay customer obsessed, that if any at all the problems comes from the customer, I need to be the first person to resolve it, and I need to bang every single door whenever it comes to that. More importantly,
never ever stop thinking big. If you have achieved something, try to take your next step to the ladder. Next is but not the least is the most important. Brutally honest. Try to be honest with your work. Try to be honest with your partners. Try to be honest with your family and friends. Never ever make the false commitments, guys. बहुत hurt होता है, and that typically is not good for you. Last but not the least, detachment. If you think it is not working, detach yourself from that. Learn the art of saying no. That is equally important for you to be successful in your life. And as rightly Jeff Bezos said, I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew one thing that I might regret is not trying. I tried, I success. If I didn't got the success, I learned. So वो बहुत important चीज है. So be open to the learnings, be open to the networking, be open to the vision. That's the most important thing I want to say. Thank you so much for joining the live today. This is my 6 top learnings that I had at my Amazon. And again, I'm saying this is just my view that I want to say. This is not a sponsored or influenced video by the Amazon or by any individual. This is your friend Gourav Sharma. I'm working as a technical account manager at Amazon. Open for all the opportunity. Reach out to me on LinkedIn, Twitter, Instagram. That if you have something to collab with, I'll be open to give my all things. And thank you so much, each and every single one of you, for joining the live today. चिराग भाई पार्टी ड्यू है आपके साथ, तो सिंगापुर आकर के पार्टी करेंगे वेरी सून. लेट्स डू अ कोलैब टुगेदर टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लाउड. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द लाइव टुडे. Thank you so much, Divyansh, for joining, and keep cheering, man. Your support means a lot to me. Thank you so much, Mama. It's only because of you and Dad and the entire family and friends that I was able to achieve so much that I am doing today. Thank you so much, Jaya ji, for being there at this session. Means a lot to me. Hey Vishal, always thanks for the silent supporter for the team. Cheers with Gaurav. You have always opened your arms whenever the help needed. Hey Kunal, thank you so much. Long time no see at the live session, buddy. Thank you so much for joining the live today. Thank you so much, Vishal sir, Vijay sir, for joining the live today. It means a lot to me. And every single one who have commented or who haven't commented for the live session. This is your host and host Gaurav Sharma. Right now, I have to sign off, but definitely please like, share, and subscribe to Cheers with Gaurav. Many more exciting video coming your way. But I thought कि यार एक ये special occasion है जो मुझे सबके साथ share करना है और celebrate करना है. So thank you so much once again for joining the session today. Please like, share, and subscribe to my channel, and more importantly, don't forget to hit that bell icon. खुश रहो, मौज करो, मस्त रहो, अपनी family के साथ रहो, and more importantly, keep your work at your priority. Definitely start learning the prioritizing thing. क्या prioritize आपको life में करना है. Rest all, I guess what I can say is respect your parents, respect elders, love to all like friends and family members. Thank you so much for everyone for joining the live today. Signing off, Gaurav Sharma. Thank you so much. Bye bye.